Jai Jagannath. Friends, this was the Panda. Welcome to Master English. Pile plus 2 English. ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ VST1 ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତି ଆସିବ 15ଟା MCQ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ ଗ୍ରାମର ସେକ୍ସନ ଅଲରେଡି ପାଖାପାଖି 5-6ଟା ସରି ଯାଇଛି ତ ଇଂଲିଶର ପ୍ରୋଜ୍ ପାର୍ଟର MCQ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି ତ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ VST ସେଟ୍ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଓକେ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲେ ପରେ ସେମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ମାନେ MCQ ସେସନ ସ୍ପେଶାଲି ଜଣା ପଡିଯାଏ ଆମେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ तुमको आंसर दबार अछि within 4 सेकंड प्रथम प्रश्न होची कौन बोले why did Churchill have high regards for the headmaster why did Churchill have high regards for the headmaster for his headmaster headmaster का प्रति तांको मनरे माने अधिक सम्मान काहे की थिला why ऑप्शन ए because of him he was able to take admission into Harrow karan tanko pai dekho Harrow re admission militila b because his headmaster considered everything at grassroots karan tankar headmaster सब जिनसे grassroots ru consider करथिले option c because he never believed in paper performance and option d because he took a broad minded view of his Latin prose कोटा ठीक उत्तर which is the correct answer pile correct answer कोटा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए ऑप्शन ए रे कौन अछि देखो बिकॉज ऑफ हिम ही वाज एबल टू टेक एडमिशन इनटू हेरो बिकॉज ऑफ हिम ही वाज एबल टू टेक एडमिशन इनटू हेरो कारण तांको पई से हेरो रे एडमिशन हेइथिला एंड इट इज वेरी मच लास्ट फर्स्ट यूनिट रो माने सेकंड पैराग्राफ रो लास्ट लाइन असिस्ट के पढी दबो से लिखा हिची it is very much to it is very much to his credit and I have had the greatest regard for him ये जो सेंटेंस होची ये सेंटेंस रो एमसीक्यू एटा बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न होची बिले व्हाट डज द एक्सप्रेशन लेट हिम गो कोल्ड मीन इन द पोएम मनी मैडनेस रे लेट हिम गो कोल्ड जो कहा गला लेट हिम गो कोल्ड कहले कोन तुम कोन बुझुचो एतरो what do you mean by let him go cold option a man without money should be allowed to live insensitively गोटे पैसा नथिबा मनीष सेंसिटिवली बंची पारिबो नाही ऑप्शन बी ए मैन विदाउट मनी शुड बी गिवन सम ब्रेड किछि रोटी दिया जिवो ताको ऑप्शन सी ए मैन विदाउट मनी शुड बिहेव पोलाइटली ताको माने भद्र भाव रे बिहेव करा जिवो ऑप्शन डी ए मैन विदाउट मनी हैज नो राइट टू लिव बंचिवार अधिकार नाही ताले ठीक उत्तर कोन हबो व्हिच इज द करेक्ट आंसर the correct answer is it is option A. Option A. Yes. Option A kahi ki a man without money should be allowed to live insensitively. Insensitively. କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ sensitively behave କରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ସେ କଣ ଖାଇବ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି କିଏ ଜେଣ୍ଟଲ ବିହେଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସୋ insensitively ସେ ବଞ୍ଚେ ସୋ ଅପସନ ଏ ହଉଛି यार ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା नो राइट टू लिव ना बंचिवार अधिकार नहीं कोठी लिखाई आशीष ऑप्शन डी कौन कहीदेल बंचिवार अधिकार नहीं कि तार बंचिवार अधिकार अच्छी ना हाँ परवर्ती प्रश्न होची इन व्हिच एज इन इंग्लैंड डिड चार्ली एंड हिज फैमिली लिव चार्ली और माय मदर चैप्टर एमसीक्यू आइछि सो इन व्हिच एज इन इंग्लैंड डिड चार्ली एंड हिज फैमिली लिव चार्ली और तंक परिवार माने इंग्लैंड रो को एज रे को समय रे सेठी माने बसवास करूथिले ऑप्शन ए रोमांटिक एज ऑप्शन बी एलिजाबेथन एज ऑप्शन सी विक्टोरियन एज एंड ऑप्शन डी मॉडर्न एज चारटा ऑप्शन अछि सो इन व्हिच एज इन इंग्लैंड डिड चार्ली एंड हिज फैमिली लिव ऑप्शन ए रोमांटिक एज ऑप्शन बी एलिजाबेथन एज ऑप्शन सी विक्टोरियन एज ऑप्शन डी मॉडर्न ऑप्शन सी इज विक्टोरियन एज आशीष यू आर करेक्ट विक्टोरियन एज बहिर अछि एंड विक्टोरियन एज इज द करेक्ट आंसर विक्टोरियन एज रे माने रहुथिले परवर्ती प्रश्न देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि बिले कोन एट व्हाट एज द राइटर स्टीव जॉब्स वाज डिसमिस्ड फ्रॉम एप्पल केते वर्ष बयस रे स्टीव जॉब्स को एप्पल रु डिसमिस कराइतले माने एप्पल रु काढी दिया आइतला बेरे ओके एट व्हाट एज द राइटर स्टीव जॉब्स वाज डिसमिस्ड फ्रॉम एप्पल ऑप्शन ए 20 ऑप्शन बी 40 ऑप्शन सी 30 ऑप्शन डी 25 At which age, what age the writer Steve Jobs was dismissed from Apple? Apple ru kete barsha boyas re yanku dismiss kara jaithila from Apple 20, 40, 30 and 25. These are the options. Which is correct answer?
ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ 25 ହଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି it was 30 years आशीष 20 years କେମିତି ହବ 30 years ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ I just turned 30 ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ I just turned 30 ମତେ just 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ look at the your book so 30 is the correct answer ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ in what company did Herbert work Herbert मनी ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପିଲେ ଏଇଟା କହିଲ ଆମର ଯୋଉ मंकीस्पा ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇଛି ସୋ କଣ in what company did Herbert work କୋଉ कंपनी रे Herbert वो काम କରୁଥିଲା ऑप्शन ए bread and breakfast B Nestle India Limited C Man Meggins D Apollo Private Limited ये होचे ऑप्शन सो କୋଉ कंपनी रे Herbert काम କରୁଥିଲା ପିଲେ in which company he was working Herbert was working in which company bread and breakfast Nestle India ऑप्शन सी के गला सौम्य रंजन साहू माइंड मेगिन्स ओके सौम्य रंजन साहू वेरी गुड माइंड मेगिन्स शर्मिष्ठा मिश्र बीटा होची मा भूल उत्तर बेटा ठीक उत्तर होची इट वाज ऑप्शन सी माइंड मेगिन्स कंपनी रे हर्बर्ट काम करूतला the unknown person the stranger was from mind meggins he told Mr. White when he was asked so the right answer is mind meggins परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची having gathered the women of the neighborhood of writer's grandmother having gathered the women of the neighborhood the writer's grandmother got an old drum and started to sing what did she sing what did she sing से कौन गाइले हैं से पाखर पाखर एटा होची पोटैटो फिलेडी रो क्वेश्चन टा तो पाखर पाख माने पड़ोसी रो स्त्री मान को जमा करिकी जो ग्रैंडमदर से दिन नाचिला गाइला से कौन गाइथिले को गीत गाइथिले ऑप्शन गुडी होची एला ऑप्शन बी ए वेडिंग बैलेड सी द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स एंड डी ए पार्टिंग लिरिक होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स शर्मिष्ठा मिश्रा यू करेक्ट होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स दिस वाज द करेक्ट आंसर होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स होचे बेले करेक्ट आंसर पूरा एकदम ठीक उत्तर बेले देखिबा परवर्ती प्रश्न होची हु वेयर टॉट लैटिन एंड ग्रीक एट हैरो स्कूल रे लैटिन और ग्रीक काहाकू पढ़ाउथला सौम्य रंजन गलासी आशीष भी कहलासी सर्वेष्ट भी जी बढ़िया परवर्ती प्रश्न होची हु वेयर टॉट लैटिन एंड ग्रीक एट हैरो स्कूल रे लैटिन एंड ग्रीक काहाकू पढ़ाउथला ऑप्शन ए द क्लेवर स्टूडेंट्स बी द डल स्टूडेंट सी एन एवरेज स्टूडेंट डी नॉन ऑफ द अबव ये कहला शर्मिष्ठा कहला क्लेवर स्टूडेंट सौम्य रंजन साहू क्लेवर स्टूडेंट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आउ के आंसर दोचन देखिबा शर्मिष्ठा एंड सौम्य ओके dull student tujamani yeah dull student okay okay this is the correct answer आशीष भी कहला बढ़िया ठीक उत्तर समस्त कहिजे पिले ठीक उत्तर होची the clever students were taught latin and greek clever पिला मान को पढ़ाउतला हर स्कूल रे परवर्ती प्रश्न कोन whom had god sent to the house of the sick man whom had god sent to the house of the sick man sick माने रुग्ण लोकर घर को भगवान काहाकू पठेइतिले भगवान काहाकू पठेइथिले ऑप्शन होची वन ऑफ हिज लवर्स बी वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स सी वन ऑफ हिज डिवोटीज डी वन ऑफ हिज सर्वेंट काहाकू पठेइथिले whom had god sent angel आशीष कहला angel means option b one of his angel option b this is the correct answer सौम्य रंजन आशीष बढ़िया 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 this is the correct answer very good this is the correct answer so the god had sent one of his great angels to the house of the sick man yes aditya सौम्य रंजन okay परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची what should we leave behind when we depart from this world पृथ्वी रु जेते हम जीवा पिले माने हमर जेते परगति हबो what should we leave हम कोन छाडी की जीवा हम पछपटे कोन छाडी की जीवा ऑप्शन ए our footprints b the golden pages of history c our noble deeds d the lives of great men ये होचे ऑप्शन कोन वाला what should we leave behind when we depart from the world option a के कहला our footprints और मिस्टर सौम्य रंजन मिश्र ए आशीष राउत ए बाबा रे पाद चिन्ह छाड़ी की जीव तोर पाद चिन्ह को लोक माने आजिकल जो बाहागर अलिता देकी रखुचंती सेंती रखिबे ना हैं काई एंती प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल कथा उडा काई कहजर बिले आवर नोबल डीड्स इट इज ऑप्शन सी रे बाबा हैं सॉरी टू बी सो फनी बट ऑप्शन सी हबो आवर नोबल डीड्स आमे जो काम करिबा
आमे जो भलो काम करबा तार ताकू लोक रखिबे माने उदाहरण स्वरूप लोकंकु देबे बुझी होची सो ऑप्शन सी आवर नोबल डीड्स आमे आमे जो महत कार्य सब करबा सेटा होची ठीक उत्तर बुझेला बही रे लेखा है फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सो ए मैन ए फॉरलन एंड शिपरेक ब्रदर्स सिंग शाल टेक हट अगेन सेठी लेखा है कि नहीं फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर बही रे लेखा है परवर्ती प्रश्न होची व्हाई डज द पोएट रोल्ड डाल यूज कैपिटल लेटर्स एट द एंड ऑफ द पोएम टेलीविजन टेलीविजन ର ଶେଷରେ पोएट रोल्डाल काहेकि कैपिटल लेटर यूज करिसंती काहेकि कैपिटल लेटर यूज करिसंती कहबा व्हाई डज द पोएट रोल्डाल यूज कैपिटल लेटर्स एट द एंड ऑफ द पोएम टेलीविजन टू scold the parents b to explain the children of the necessity of watching tv c to warn the parents against the harmful effects of watching tv and d to face the good effects of watching tv to warn the children शर्मिष्ठा कहला to warn the children एठी मा एठी सेटा ही नहीं एठी अछि to warn the parents okay so it would be option c Shomyaranjan Sahu very good beta so to warn the parents against the harmful effects of watching tv that's the correct answer अला पेरेंट्स को सतर्क करैबा पई जो टीवी रो हार्मफुल इफेक्ट अछि ता ऊपर सतर्क करैबा पई सेटा कहै जाय छी सी तुजामणि ओके ओके शर्मिष्ठा पुष्पांजलि गुड 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 परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची व्हाट वाज द नाइट लाइक व्हेन द शॉर्ट स्टोरी द मंकीज पा ओपन जेते बेले माने ए नाइट ता कोन हैची स्टार्ट हैची बुझे होची पिले तो सेते बेले कोन हैची व्हाट वाज द नाइट लाइक व्हेन द शॉर्ट स्टोरी द मंकीज पा ओपन मंकीज पा जेते आरंभ होईची नाइट रो कंडीशन केमति थिला calm and quiet option b then terrible and cyclone and c bright and clean and option d dark and stormy so these are the option what are the night like when the short story the monkey's paw open calm and quiet terrible and cyclonic bright and clean dark and stormy evidru kota thik which is the correct answer pele option d Apalak Priya Priyadarshi Reddy good option d it was dark and stormy this is the correct answer dark and stormy also ekdam correct answer so the night was dark and stormy when the short story of the monkey's paw opened so option d होची ठीक उत्तर पुष्पांजलि साहू d the correct answer परवर्ती प्रश्न देखिबा where did Steve Jobs address while sharing the three story of his life where did Steve Jobs address while sharing the three stories of his life कोठी से ए जो भाषण दैथिले तांकर जो तीनटा स्टोरी थिला से तीनटा स्टोरी रो शेयर करथिले कोठी at Florida University at New York University then at Stanford University at California University these are the options कोठी ठीक उत्तर कोन Stanford University assess yes at Stanford University option C at Stanford University the address was given by Steve Jobs at Stanford University when the students are just going to commence their classes at the time সেই সময় পরবর্তী প্রশ্ন Stanford University was ঠিক উত্তর পেলে পরবর্তী who killed Jhandu's mother mystery of the missing cat who killed Jhandu's mother question number 13 who killed Jhandu's mother झंडूर मां को किए मार देला ऑप्शन ए C Maharana's father B the servants in C Maharana's house option C the villager and option D some wicked person who killed Jhandu's mother servant किए कहला नरेश okay Anu option B होची the servant in C Maharana's house the servant option B आशीष भी कहला yes B the servant in C Maharana's house शर्मिष्ठा good पुष्पांजलि भी समस्ते कहिजे पहिले बी होची एकदम ठीक उत्तर बी द सर्वेंट ऑफ श्री Maharana's house killed Chandu परवर्ती प्रश्न why did 25 senior company executive gather in an executive seminar केला बुद्धवा मैजिक ऑफ टीम वर्क को क्वेश्चन why did काहे की जमा हेतिले 25 जण सीनियर एग्जीक्यूटिव काहे की जमा हेतिले ओके कोन भाई ऑप्शन ए फॉर इवैल्यूएटिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय मान कर वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिबा पई ऑप्शन बी फॉर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन परवर्ती कंपनी रो परवर्ती माने रणनीति स्थिर करिबा पे स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भाई ऑप्शन सी फॉर टेकिंग स्टेप फॉर द कंपनीज डेवलपमेंट कंपनी को डेवलपमेंट करिबा पई ऑप्शन डी फॉर फाइंडिंग आउट द रियल प्रॉब्लम्स व्हेन द एम्प्लॉयज डिस्काउंट
माने एम्प्लॉई मानकर रियल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करबा पाए ऑप्शन बी किए गला पुष्पांजलि सौम्यरंजन साहब ऑप्शन बी फॉर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन इट इज ऑप्शन बी and this is the correct answer guys. So 25 senior executives company executives gathered in an executive seminar for strategic discussion option b strategic discussion होची ठीक उत्तर लास्ट क्वेश्चन आज VST 1 रो लास्ट क्वेश्चन है सबुदिन ठीक 7टा बेले इंग्लिश क्लास हो पे आउ 7:45 नेक्स्ट क्लास अच्छी कौन करवा मत कह एमआईएल ओडिया अच्छी पॉलिटिकल साइंस अच्छी ऑप्शनल ओडिया अच्छी तीनटा भीतर को क्लास पे जीव 7:45 मत कह 7:45 8टा हाँ 7:45 और 8 7:45 8टा भीतर को क्लास हम तुम नेक्स्ट कह जोड़ा भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन पे व्हेन डिड स्टार्स बिगिन टू पीप When did stars begin to peep? केते बेले तारा माने सब उनकी मारले. When did star began to peep? When Peter knelt, when Peter leaned on the chair, when the moth hour waned from the fields. Option D. When the sparrow chirped. ठीक उत्तर कौन बोले? What is the correct answer? When did star begin to peep? When Peter knelt. जेते बेले Peter knelt करी बसी पड़ला. Option B. When Peter leaned on the chair. Peter ଯେତେବେଳେ lean କରି ବସିଲେ when the moth hour went from the fields and when the sparrow chirped. Option C. Option C. आशीष कहला पुष्पांजलि ओडिया कहला अच्छा स्टडी option C. Option C. Option C. Okay. Option C. Option C होची correct answer when the moth hour went from the field. ଯେତେବେଳେ moth hour ଟା କହିଛି ମାନେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି field ରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି ତାପରେ the star begins to peep. तारा माने उनकी मारी चलते yes for all so see you in the next class केतरा बेले करवा 7:50 sharp 7:50 7:50 तो मान को 25 मिनट्स रो गैप दिया गला पिले 25 मिनट्स प्रेस फ्रास हो 7:50 बेले नेक्स्ट क्लास sharp 7:50 बुझेला 7:50 रे क्लास हो तो कोडा पॉलिटिकल साइंस करबा कि एमआईएल ओडिया करबा नेक्स्ट तापर पॉलिटिकल साइंस तीनटा क्लास हबो ओके सकाळे अपलोड सेशन संध्या रे लाइव सेशन कंटीन्यूअसली गोटे दिन खाली ए भितरे माने परीक्षा पर्यंत गोटे दिन बंद रहबो सेटा होची 10 आउ कोनोसी दिन बंद रहिबो नाही ओके सो सी यू द नेक्स्ट क्लास बाय बाय टेक केयर जय जगन्नाथ